हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। लास्ट लेक्चर पर्यंत आम कौन करथिले देखो, लास्ट लेक्चर पर्यंत जदि मन पकेबो टिल लास्ट लेक्चर हम कौन करथिले मैट्राइसेस रो अराउंड 11 वीडियोस पूरा मैट्राइसेस रो हम थ्योरी प्रॉब्लम्स हमरो सीएचएससी रो बुक रो सब सॉल्व कर देथिले। एलिमेंट्स रो बुक रो पूरा एक्सरसाइज 4.4a एंड 4b दिटा जा सॉल्व कर देथिले। तापर हमर जेमते ट्रेंड चल मु जेमते आपन मन कहूछि कि जेते बेले तमरो टॉपिक पढियार सरजियो सेही टॉपिक सहित तार 2019 20 एटलीस्ट 21 पर्यंत या 22 पर्यंत एही 4 वर्ष कंसेक्यूटिव 4 वर्ष या तो पुराना कले भी चलियो, किंतु एटलीस्ट एती तो करियो बुढिया एती करो सो दैट यू विल बी एबल टू नो कोन जना पड़ियो को ट्रेंड रो क्वेश्चन आउछ सेटा हमु जना पड़ियो। तो एबिठु हम टिके टिके प्रैक्टिस करि चलिया। तो एग्जाम पर जेतल हमर पोर्शन सरजियो अब तो 4टा चैप्टर सरी गला आ 7-8टा चैप्टर हला जल्दी जल्दी हेतला जेमति कि पोर्शन सरी हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दो। हां, और रिवीजन सीरीज ओडा सब लाइव रहियो हला। रिवीजन सीरीज विल बी लाइव। सप्ताह में 3 दिन सेलेक्ट करियो आ ईच डे रे हम 2 आवर्स रो रिवीजन रखियो, लाइव सेशंस रखियो, लाइव हम जोड़ियो, लाइव कथा एमती बसी जेमती हम कथा हो सेम कथा डाउट पचारि परियो, राइट। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करबा, प्रीवियस इयर्स रो क्वेश्चन डिस्कस करबा, सब हम डिस्कस करबा, लाइव कमेंट करके डिस्कस करियो, ठीक अछि। तो चैनल रो जदि नुआ थियो चैनल डाको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। जेमती सब बेले कहू कोन करियो एल एंड एस स्क्वायर कर दो। हां, एथरो आपण बहुत जिंस मिलियो हम चैनल जदि जीवो हम चैनल रे हम 2019 2018 20 21 और 22 रो सीएचएस रो बोर्ड पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर छु। सीएचएस बोर्ड रो ए पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व करी बगिछु। ता से तो एमसीक्यू सीरीज रखु छु हम, एमसीक्यू सीरीज गोटे अछि, तापर हमर ओजेई सीरीज अछि। हां, ये सब बहुत गोटे जिंस अछि, अपन जाई देख परिबे, ठीक अछि। तो स्टार्ट करियो आज रो वीडियो। आज रो वीडियो होछि 2019 ऑल शिफ्ट सॉल्यूशंस। हां, जते शिफ्ट रे 2019 रे मैट्राइसिस रो जेई मेन रो जो शिफ्ट रे जति क्वेश्चन आछला सब हम डिस्कस करबा गोटे गोटे करी, ठीक अछि। तो चलो जिबा फर्स्ट क्वेश्चन को कोन दिया अछि देखो। तो एटा होछि 2019 रो क्वेश्चन। गिवन a इज इक्वल टू कोन दिया अछि देखो, a इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। दिस इज a। कोन गिवन अछि देखो, गिवन a इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। यस यार a ट्रांसपोज बाहर करो। कौन गिवन है देखो, देन द मैट्रिक्स a रेज टू -50 हम दरकार। तो a इनवर्स टा आगे बाहर करिया, तार पावर टा -50 को रेज कर दो। कोन करिया हम a इनवर्स टा हम बाहर करिया आ a इनवर्स रो पावर टा हम कोन करिया -50 को रेज कर दो। a इनवर्स रो पावर टा -50 को रेज कर दो। तो केमति करिया देखो, a ट्रांसपोज बाहर कला हम कोन मिलियो, कोन गोटे रिलेशन मिलियो, देखियो कोन रिलेशन मिलछि। a ट्रांसपोज रा हमु मिलियो cos थीटा माइनस sin थीटा रो कॉलम हे जियो एंड sin थीटा cos थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा। एथि कि हमर मिलला a ट्रांसपोज। अब जदि मल्टीप्लाई करियो a into a ट्रांसपोज, केमति मल्टीप्लाई करियो, फर्स्ट रो into फर्स्ट कॉलम एमति करियो, राइट ना। तो cos थीटा into cos थीटा देखो, फर्स्ट हाउ फर्स्ट cos थीटा into cos थीटा हेगला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा विल बी प्लस sin स्क्वायर थीटा। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम विल बी sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। सेकंड रो सेकंड कॉलम विल बी sin थीटा which is sin स्क्वायर थीटा cos थीटा into cos थीटा will be equal to cos स्क्वायर थीटा। एमति आसला। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हेगला, ये माइनस और प्लस कैंसिल हेगला। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हेगला 1, एटा हेगला 0, एटा हेगला 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। तो एटा हेगला तमरा i। व्हाट इज दिस i? तो a into a ट्रांसपोज, हां, नॉट a इनवर्स। एटा हला तमरा a ट्रांसपोज, a into a ट्रांसपोज i हेगला। तो देखो एठी हम लिखबा a into a ट्रांसपोज हेगला तमरा i। हां, दिस इज इक्वेशन 1। एटा हम प्रूफ करले। तो जदि एमती होची तो a कोन होची, a होची तमरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मन पड़ला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जदि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हबो वी नो कि a into a इनवर्स इक्वल टू i आल्सो।
हम जानते ना a into a inverse I मध्य तो 1 और 2 को जब हम इक्वेट करिवा व्हाट यू विल गेट कि a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a इनवर्स मिल गला a ट्रांसपोज इक्वल टू a इनवर्स नाउ हमें एबे a इनवर्स टाको लिख परिया a इनवर्स टाको लिख परिया कोन लिखिया a इनवर्स टाको लिख दो a ट्रांसपोज हम जानछे a गिवन अछि ताकू उल्टा करके लिख दो उल्टा करके माने रो को कॉलम रे इंटरचेंज कर दियो cos थीटा minus sin theta and this will be equal to sin theta and cos theta sin theta and cos theta so एटा हेगला a inverse कोन हेगला पले a inverse अब कोन दरकार देखो a raised to minus 50 दरकार a raised to minus 50 and when theta is equal to pi by 12 आगो a raised to minus 50 करियो तो जो जेतेला हम a raised to minus 50 करिवा therefore a power minus 50 equal to a inverse raised to minus 50 raised to 50 हेगला तो a inverse रामु जो मिलथिला कोन मिलथिला देखि दबो ठीक a inverse हम मिलथिला cos theta sin theta minus sin theta cos theta तो cos theta माने एबे हेगला cos 50 theta cos 50 theta minus sin 50 theta and here is sin 50 theta and cos 50 theta ठीक अछि पावर जोटी थीटा थिला हमें कोन करले सेठी 50 रखि देले चलो एबे कोन करिवा देखो एबे हमकु दरकार थीटा रो वैल्यू जेतेले कोन हबो देखो क्वेश्चन रो थीटा रो वैल्यू पाई बाय 12 ना हां व्हेन इट इज पाई बाय 12 व्हाट विल बी द वैल्यू तो cos ऑफ 50 into थीटा रो वैल्यू कोन हेगला पाई बाय 12 सिमिलरली माइनस साइन ऑफ माइनस साइन ना नहीं 80 साइन अछि 80 माइनस साइन अछि राइट तो 80 प्लस अछि 80 हमर माइनस टा ठीक अछि तो एटा प्लस टा sin of 50 into theta is your pi by 12 and here is your minus sin of 50 into theta will be pi by 12 and here it is cos of 50 into theta will be pi by 12 ए यार वैल्यू बाहर कर दो जोटा आइसो सेटा का हमरा आंसर ठीक अछि तो 50 पाई है ना 2 रे कैंसिल कर दो देखो गोटे गोटे वैल्यू मु बाहर करछु cos 50 पाई डिवाइड बाय 12 रे डिवाइड कर देले एटा हेगला 4 पाई है ना तो cos ऑफ 4 पाई प्लस 2 पाई बाय 12 हम लिख पारे cos 4 पाई प्लस थीटा विल बी cos थीटा cos 4 पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा 2 पाई बाय 12 2 रे कैंसिल हेगला 6 तो cos ऑफ पाई बाय 6 and cos of pi by 6 will be equal to cos 30 which is equal to root 3 by 2. Now sin of 50 pi by 12 again same technique करिवा cos जगह हमें सिर्फ sin लिख दो sin हेगला 4 pi plus 2 pi by 12 so this is equal to sin 4 pi plus theta again sin theta kind of 4 pi plus theta को ले कोठी आछो first quadrant को आछो and this is sin pi by 6 which is equal to 1 by 2 तो यार आंसर कोन हेगला देखो cos रहेगला √3 by 2 एटा हेगला 1 by 2 this will be minus 1 by 2 and here is your √3 by 2 तो एटा हेगला आंसर बुझलो कोन कले आउथर रिवीजन कर दबाटी देखो a गिवन अछि मु a ट्रांसपोज बाहर कले दुटा जाको मल्टीप्लाई कले मते i मिलला तो व्हाट आई गॉट कि a into a transpose is equal to y that is your equation 1 but we know कि a into a inverse equal to i और हमें जानछे यदि A orthogonal matrix हला therefore A inverse equal to A transpose. If A is an orthogonal matrix then A inverse will be equal to A transpose. तो A दुइटा को जतल इक्वेट करले हमको कोन मिलला A transpose equal to A inverse तो A transpose हमें जानछे अब एटा को हमें कोन लिख देले A inverse हेगला A inverse अब A inverse raised to 50 करियर अछि why because we want the value of A raised to minus 50 कोन दरकार हमको A raised to minus 50 वाला वैल्यू दा दरकार तो a raised to minus 50 पाई a इनवर्स कर देले तार पावर टू रेज कर देले 50 को तो जतले पावर टू रेज कर देले 50 को कोन आसला हमको एटी आसला जोटी थीटा थिला सेट सब 50 मल्टीप्लाई हे गेला ओके अब cos 50 पाई बाय 12
यार वैल्यूटा एट में बाहर कर देखो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 11th स्टैंडर्ड एटा तो तुम जानछ नहीं कि sin 4 pi plus theta is sin theta and cos 4 pi plus theta is also cos theta हेगला तार वैल्यू बाहर कर दे √3/2 1/2 minus 1/2 √3/2 now let us see which one is your answer √3/2 a I think first ना हाँ बुझिला तो एमती टाइम इजी क्वेश्चन आछे पेशेंस धरी करियो बुझी की करियो टिके हां प्रथम बेले कला हे पारे टिके टाइम लागो किंतु केते किछि क्वेश्चन प्रैक्टिस कला पर द थिंग्स विल बी लॉट मोर इजियर फॉर यू डरिबनी और सॉल्व ठीक अछि चल now question number 2 a is equal to 2b1 b square plus 1b 1b2 then minimum value of determinant of a divided by b तो हमें आगे कौन करबा यार डिटरमिनेंट बाहर करबा तो डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to कौन करबा डिटरमिनेंट भीतर लिखबा एटा काई ना मैट्रिसेस भीतर अछि मैट्रिसेस रो वैल्यू हमें बाहर करि परिबा नाही डिटरमिनेंट हले हम ताको एक्सपांड करि परिबा सो दिस इज 1 b and 2 नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट केमति करबा फर्स्ट रो एक्सपांड करबा 2 into 2b square plus 2 minus b square minus b into 2 into b will be 2b minus b then plus 1 into b square minus b square minus 1 so this is equal to 2 times this will be b square plus 2 minus b into 2b minus b will be b and plus 1 into b square minus b square will get cancelled 1 into minus 1 this will be minus 1 so this can be written as 2b square plus 2 into 2 will be 4 minus b square minus 1 so this will be equal to 3b square sorry 2b square minus b square will be only b square है ना so this is equal to b square plus 3 so determinant a कौन आसला b square plus 3 हमको कौन दरकार देखो determinant a by a रो minimum value दरकार determinant a by a therefore determinant of a divided by b this is equal to 3b square plus b divided by b is equal to 3b square b square plus 3 thila this is b square plus 3 not 3b square plus it was b square plus 3 so this is b square plus 3 divided by b so b square by b it can be written as b square by b plus 3 by b so b square by b will be b plus 3 by b plus 3 by कोच यार मिनिमम वैल्यू कौन होगा मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा हमें जान से जदि वो दुईटा वैल्यू नेति फॉर एनी टू वैल्यूज फॉर एनी टू पॉजिटिव वैल्यूज for any two positive values a and b the am arithmetic mean am is arithmetic mean always will be greater than equal to geometric mean दीटा नंबर arithmetic mean टा geometric mean to बेसी होबो जदि आ a आ b नेली arithmetic mean will be a plus b by 2 and geometric mean will be root of a so this is the formula arithmetic mean always greater than equal to geometric mean and that is always greater than equal to the harmonic mean which is also equal to 2ab divided by a plus b तो एटा मन रखो जदि आमे एटा को a नेले a को कोन नेले b and b को कोन नेले 3 by b तो कंडीशन कोन लिखबा a plus b by 2 greater than equal to root of ab एमते लिखबा सो दिस a माने कोन b plus 3 by b divided by 2 greater than or equal to square root of b into 3 by b b and b cancel हेगला एटा root 3 हेगला so therefore हेगला आंसर आ कोन b plus 3 by b greater than equal to 2 root 3 माने b plus b 3 by b रो जो वैल्यू आसला b plus 3 by b जो वैल्यू आसला that is 2 root 3 or more than that कोन हबो 2 root 3 हबो क्या या टू अधिका हबो है ना ये जो b plus 3 by b रो वैल्यू टा केते हबो 2 root 3 या टू अधिका माने यार मिनिमम वैल्यू कोन होइगला द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a divided by b is equal to 2 root 3 मिनिमम वैल्यू माने यार वैल्यू टा एतिकी हबो या टू अधिका हबो सब बळे एतिकी या टू अधिका हले सबटु छोट वैल्यू कोन होला सबटु मिनिमम वैल्यू होला 2 root 3 बुझि गेला हैं तो आंसर देखि दो मिनिमम वैल्यू 2 root 3 बुझिला चलो चलो
अन्य क्वेश्चन पर देखो पिले एटा ना जो देखा जाउनी ना एटा आर हां एटा आर 0 p p 2 q q minus q r minus r r a into a transpose equal to I. Then determinant of p is equal to mod p mod p. So this is a given na, since a into a transpose equal to I, a into a transpose is equal to I, this is given. So a is 0 p p and this is 2 q q minus q r minus r r, this is a into a transpose 0 2 q r p q minus r p minus q r, a into a transpose, and this is equal to I माने 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 मल्टीप्लाई करबा कोन मल्टीप्लाई करबा तो याकू या सहित मल्टीप्लाई करबा हमु मॉड p दरकार नै कि फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम 0 into 0 will be 0, 2q into 2q will be 4q square, r into r will be equal to r square. First row second column 0 into p will be 0 plus 2q into q will be 2q square minus r square. First row into 0 into p will be 0, 2q into minus q will be minus 2q square, r into r will be r square. P into 0 will be p 0, 2q into q will be 2q square minus r into r will be equal to minus r square. Second row first column p into p will be p square, q into q will be q square, r into r will be equal to r square. First row into third column p into 0 will be 0, q into 0 will be 0 and minus r into 1 will be equal to r. Minus r into 1 will be equal to minus r. Then third row into first column p into 0 will be 0, minus q into 2q will be minus 2q square, r into r will be equal to r square. P into p will be p square, minus q into q will be minus q square minus r square. Then third row into third column p into 0 will be 0, q into 0 will be 0 and r into 1 will be equal to r. This is a into a transpose and this is given as I 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. देखो अभी दुईटा मैट्रिक्स इक्वल होगला यार मतलब करस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल, तो यार वैल्यू कौन हो देखो 0 plus 0 plus 0 will be r and this is equal to 1 तो r रो वैल्यू आसीगला 1, so therefore r मिलगला हमको 1 किंतु हमको मॉड p दरकार नै कि चलो आउ कोन मिलबा हमको देखो p square plus q square plus r square याकू देखो p square plus q square plus r square equal to 1 नै कि and p square plus q square plus r square and this also equal to 1, but r रो वैल्यू 1 पके दियो p square plus q square plus r is 1, so 1 square equal to 1, 1 1 gets cancelled, so p square plus q square equal to 0. आउ कोन अछि देखबा याकू देखो p square minus q square minus r square equal to 0, p square and p square minus q square minus r square minus का प्लस देखते हो minus r square and that is equal to 0, minus r square that is equal to 0 and r is 1, so p square minus q square is equal to 1, since r equal to 1 r जगह 1 लिख ले सही पढ़ निकले तो याकू और याकू देखो एटा को इक्वेशन 1 कर देबे आपको इक्वेशन 2 कर देबे दुईटा जगह ऐड कर देबे तो p square plus p square 2p square equal to 1, so p square will be equal to 1 by 2, p is equal to plus or minus 1 by root 2, so mod p will be equal to mod of plus minus 1 by root 2, so mod रो कोन आसो सब पॉजिटिव वैल्यू आसो तो p equal to 1 by root 2 किछ नथिला छोटो क्वेश्चन नथिला एकदम छोटो क्वेश्चन कोन थिला देखो एमति थिला a into a ट्रांसफर this is a ट्रांसफर इक्वल टू y मल्टीप्लाई कर दला एटा आसला करस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल टू कला एटा रो r आसला
तीनटा एलिमेंट इक्वेट कल जोड़ा जोड़ा को राउंड कर से तीनटा एलिमेंट इक्वेट कल सॉल्व कर देला p रो वैल्यू बाहर करला और तार मॉड p डिटरमिनेंट ऑफ p बाहर कर ठीक अछि चल आगु दिबा नेक्स्ट क्वेश्चन लेट a and b be two invertible matrices जदी a और b इन्वर्टिबल हबो इन्वर्टिबल माने a इनवर्स and b इनवर्स बोथ हाँ देखो पहले कौन देछि a and b are two invertible matrices invertible माने a inverse and b inverse दुटा जगह एग्जिस्ट करियो दुटा जगह ऑर्डर अछि 3 क्रॉस 3 हां एंड इफ देखो आउ कोन देछि गिवन डिटरमिनेंट ऑफ det माने डिटरमिनेंट a b a ट्रांसपोज इक्वल टू 8 यार माने डिटरमिनेंट ऑफ a into determinant of b into determinant of a transpose is equal to 8 अब हम जानते हैं determinant of a is same as determinant of a transpose transpose रो determinant और a रो determinant दोनों जगह इक्वल तो 8 हमें कर दबा determinant a कर दबा तो determinant a into determinant b into determinant a कर दले आपको ये गला 8 determinant a into determinant a will be determinant a रो square into determinant b and this is equal to 8 this is equal to its side of tick equal determinant b a square into b equal to it let it be equation number 1 आउ गोटे information देछि कि determinant of a into b inverse equal to 8 and since determinant of a into b inverse is equal to 8 so this is equal to determinant of a into determinant of b inverse and this is equal to 8 and that is determinant of a divided by determinant of b is equal to 8 question 2 दोट जब मल्टीप्लाई कर दो हम कौन बचा अच्छा दोट जब मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 into equation 2 and that will give you equation 1 रो अछि determinant a रो स्क्वायर into determinant b एटा है गला determinant a divided by determinant b which is equal to 8 तो determinant b कैंसिल है गला determinant a रो cube is equal to 8 therefore determinant a is equal to 8 माने 2 रो cube so this is equal to 2 using in equation 2 using in 2 रे जदी यूज करियो इक्वेशन कोन determinant a divided by determinant b equal to 8 a को 2 कर दलो 2 divided by determinant b is equal to 8 तो 2 रे कैंसिल कर दलो एटा है गला 4 तो determinant b equal to 1 by देखो जेतलो मल्टीप्लाई कला ना 8 into 8 हो ना राइट साइड दुईटा 8 अछि 8 into 8 will be 64 तो 8 टिके हमें सिंपलीफाई कर दबा दिस इज 64 तो 64 है गला दिस इज 4 रो क्यूब तो डिटरमिनेंट a is equal to 4 गोटे आंसर आसला याकि इक्वेशन 2 रे यूज करबे इक्वेशन 2 कोन डिटरमिनेंट a डिवाइड बाय डिटरमिनेंट b is equal to 8 तो a जगह 4 पुट कर दिया 4 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ b this is equal to 8 so determinant of b is equal to 4 by 8 which is 1 by 2 determinant b equal to 1 by 2 so determinant a है गला 4 आउ determinant b है गला 1 by 2 दुटा आंसर आसी गला अभी कौन पचाछि देखो हमको पचाछि एटा determinant of b a inverse into b transpose determinant of b a inverse into b transpose एटा ना b a inverse into b transpose so this can be written as this is equal to determinant of b into determinant of a transpose into determinant of b transpose so determinant of b को as it is रखियो कौन अछि तार आंसर 1 by 2 अछि ना 1 by 2 अछि determinant of a inverse is 1 by determinant of a into b transpose is determinant of b so this is equal to 1 by 2 into 1 by a is 4 ना a determinant कौन थिला 4 थिला determinant of a will be equal to 4 into b is equal to 1 by 2 so this is equal to 1 upon 4 into 4 will be 16 एटा है गला आंसर है गला चलो 1 by 16 तो टिक कर दे एटा हमर आंसर थिला आगु जुबा देखो पहला क्वेश्चन नंबर 127 a is given कौन देछि a is equal to
1 এটা হলো sin theta 1 here is minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta 1 ঠিক আছে এটা আছে ঠিক now theta between theta between 3 pi by 4 to 5 pi by 4 find and determinant of a lies in the interval या अर्थ सी कहूँ जदि थीटा ए इंटरवल भीतर रहिला तो डिटरमिनेंट ऑफ ए टा को इंटरवल भीतर रहबो ठीक अछि तो लेट अस फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए एटा हम बाहर कर डिटरमिनेंट ऑफ ए माने 1 into 1 will be 1 minus of minus will be plus so 1 plus sin square theta then minus sin theta into 1 into minus sin theta which is minus sin theta and minus of minus plus sin theta then plus 1 into sin square theta plus 1 तो ये minus sin theta plus sin theta cancel हो गया so this is equal to 1 into 1 plus sin square theta will be 1 plus sin square theta plus sin square theta plus 1 so 1 plus 1 will be equal to 2 plus 2 sin square theta so look since एबे हमें आनिबा आंसर था theta lies between 3 pi by 4 root 5 सब साइन अप्लाई कर दो therefore sin of 3 pi by 4 less than sin theta less than sin of 5 pi by 4 sin 3 pi by 4 माने sin 135 and sin 45 equal होगा ना less than sin theta less than 5 pi by 4 माने 225 डिग्री 225 थर्ड क्वाड्रेंट माने -1 by root sin से नेगेटिव हो गला एबे स्क्वायर कर देन यदि स्क्वायर करिवे देखो नेगेटिव वैल्यू था स्क्वायर रहिबो ने यार स्क्वायर कते 1 by 2 तो 0 to 1 by 2 काहे ना स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव सो दिस इज इक्वल टू 0 less than sin square theta less than 1 by 2 now 2 रे मल्टीप्लाई कर दो काहे कोन दरकार 2 sin square theta plus 2 is determinant है तो मल्टीप्लाई 2 करियो एटा तो 0 रहबो this will be 2 sin square theta less than 1 by 2 into 2 cancel हो गला 1 how do 2 add कर दो तो 0 plus 2 will be 2 will be equal to 2 plus 2 sin square theta and that is less than 3 so this is your determinant of a 2 less than determinant of a less than 3 so determinant of a will belongs to 2 to 3 ठीक है 0 तो ही परियो एठी 0 ही परियो तो 2 ही परियो एठी क्लोज कर दियो 2 ही परियो किंतु 3 ही परियो हां तो 2 क्लोज 3 ओपन एमती कोन उडा छी एमती आसो हां determinant of A lies between 2 close 3 open एटा होछि करेक्ट आंसर एमती आसीबा कथा 2,3 ठीक अछि तो ए ऑप्शन टा हटेगी तो लिख दियो 2,3 ठीक अछि बस आंसर रॉन्ग थला हम करेक्शन कर देगा जिबा if A is equal to this A raised to 32 is this then तो देखो पूरे ट्रेंड बाहर करिवा A equal to cos alpha minus sin alpha into cos alpha this is A ना जदि मु एठी A स्क्वायर फाइंड करबी A into A हो A into A माने आउट A रा को मल्टीप्लाई कर दो cos alpha minus sin alpha into cos alpha first row into first column cos alpha into cos alpha will be cos square alpha sin alpha into sin alpha will be sin square alpha बुझियला now first row into second column cos alpha into sin alpha so this is minus cos sin alpha into cos alpha then again minus sin alpha into cos alpha then second row first column sin alpha cos alpha
sin alpha cos alpha plus sin alpha cos alpha. Sin alpha is minus sin square alpha. Cos alpha into cos alpha will be cos square alpha. It minus होगा ना, into cos square alpha minus sin square alpha. ठीक है जी. So cos square alpha minus sin square alpha कौन होची? Cos square alpha minus sin square alpha will be cos 2 alpha. Minus 2 sin alpha cos alpha. Minus 2 sin alpha into cos alpha. Similarly, this is plus 2 sin alpha into cos alpha. Then cos square alpha minus sin square alpha is cos 2 alpha. ठीक है. So ऊपर sin 2 alpha आएगा, तो a square becomes cos 2 alpha minus sin 2 alpha. Here is sin 2 alpha and cos 2 alpha. तो a raised to n will be equal to, देखो a टा 81 थिला सब कोएफिशिएंट सब 1 थिला अल्फा रे, a स्क्वायर कले 2 हेगला, तो a raised to n कले कोन हेजो cos of n alpha minus sin of n alpha, and this is sin of n alpha into cos of n alpha. एमती नाउ n जगह कोन पुट करबा रे, देखो 32, तो a raised to 32 equal to cos of 32 alpha minus sin of 32 alpha, and this will be sin of 32 alpha, and this is your cos of 32 alpha, and this is equal to given 0, minus 1, 1 and 0. So cos 32 alpha equal to 0 and sin 32 alpha equal to 1. So cos of 32 alpha equal to 0 and sin of 32 alpha equal to 1. कौन आछे देखो, cos of 32 alpha equal to 0. 0 माने cos pi by 2. Cos pi by 2 0. Cos theta equal to cos alpha. जदि cos theta equal to cos alpha हो, theta equal to 2 and pi plus minus alpha. Alpha is pi by 2. So alpha equal to 32 रे divide कर दियो. So this will be equal to n pi by 16 plus or minus pi by 60, where n belongs to set of integers. बुझिए ना, 8 भी आंसर आनी परियो, किंतु 8 जति पळे आस्तियो n belongs to z हेगला, जति n belongs to z हेगला, n जगह हम कोन पुट करि परिया, 0 भी पुट करि परिया. तो alpha is equal to n जगह 0 पुट कर देले, तो कोन हेगला pi by 64. Why? Because the answer is true for all values of n. बुझिला, कौन करले रिकैप कर दियो. a गिवन थला a स्क्वायर मल्टीप्लाई कला, a स्क्वायर हमको एमसी पैटर्न आसला, जोटी अल्फा रो कोएफिशिएंट 1 आसला, अभी सेठी अल्फा रो कोएफिशिएंट कोन आसले 2 आसला. द a raised to n हेगले अल्फा रो कोएफिशिएंट n आसु, हमको a raised to 32 पछाते, तो अल्फा रो कोएफिशिएंट 32 हेगला, एंड दैट वैल्यू इज गिवन. से वैल्यू ड कोन दिछ हमको 0 minus 1 1 and 0. तो cos 32 अल्फा रो वैल्यू हेगला 0. 0 को हमें कोन लिख देले, cos pi by 2 लिख देले. तो फार्मूला आसला, फार्मूला कोन आसला, cos theta equal to cos alpha. तो cos theta equal to cos alpha, so theta equal to कोन होछ 2 and pi plus minus alpha. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मन अछि ना, हेगला. तो 2 and pi plus minus pi by 2 alpha equal to 32 रे डिवाइड कर. तो एटा आसला आंसर. जदि हमें एटा आसगला आंसर, so this answer will be true for all values of n, and where n is an integer. तो n को हमें कोन कर देले 0 कर देले, n को कोन कर देले 0. जदि n को 0 कर देले, तो हमको अल्फा पळे आसला pi by 64, which is one of the answer, that is answer D. टिक कर दो, टिक कर दो, आंसर D. आगे बुझबे. Then let the numbers 2 b c be in AP and a equal to this. The determinant of a belongs to 2, 16. Then c lies in the interval. C lies in the interval. है ना. तो आगे determinant of a बाहर करिए. Therefore determinant of a is equal to determinant of a equal to determinant of 1 1 1 2 b c 4 b square c square. now कौन करियो, c1 minus c2 कर, c2 minus c3 कर. c1 will be c1 minus c2 and c2 will be c2 minus c3.
तो एटा कौन हेगला देखो this is equal to 1 minus 1 हेगला 0 1 minus 1 हेगला 0 this is 1 here it is your 2 minus b this will be b minus c this is c this is 4 minus b square and this is b square minus c square and this will be c square याको आउट अरेंज करके लिखो this is equal to 0 0 1 this will be 2 minus b this will be b minus c this is c and this is 2 plus b into 2 minus b this is b plus c into b minus c and this will be c square. Now first column रे हमें कौन करबा 2 minus b अछि कॉमन नै गेले और सेकंड कॉलम रे हमें कौन करबा b minus c अछि कॉमन नै गेले तो एटा हेगला 0 2 minus b कॉमन नेले this will be 1 सेकंड एलिमेंट है कौन है जो 1 है जो so that is 1 and the third element है कौन हेगला ये 1 हेगला it 2 minus b कॉमन गेले 2 plus b हेगला it is 0 b minus c गला कॉमन so this will be 1 and 80 b minus c गला therefore this will be b plus c and this is equal to 1 c and c square 1 को एक्सपांड कर दो है ना तो b plus c 2 minus b so this is equal to 2 minus b into b minus c into 1 को एक्सपांड कर एटा गला so this minus this ना b plus c minus 2 minus b b plus c minus 2 minus b so b and b will get cancelled so this will be 2 minus b into b minus c into c minus 2 and what is given 2bc in AP since 2 b c in AP so b minus 2 will be equal to c minus b minus से multiply करते हो so 2 minus b will be equal to b minus c so 2 minus b minus c both are equal है ना and what about c minus 2 देखो जो differentiate है वो हमें d नहीं गले this difference is d therefore this difference will be equal to 2d so 2 minus b is d and b minus c is also d so c minus 2 will be 2d so this will be equal to 2 times dq and this is determinant of a determinant of a equal to 2 times dq so 2 times dq lies between 2 to 16 na one question ha determinant of b lies between 2 to 16 so this lies between 2 and 16 so let us divide by 2 सब को 2 रे divide कर दो तो 1 less than dq less than 8 है ना so this is 1 का cube less than d का cube less than 2 का cube therefore d lies between 1 to 2 d lies then c lies in the interval so d lies between 1 to 2 now what is c equal to कौन हो c equal to एटा फर्स्ट टर्म एथरे d ऐड कले एठी आसला a3 d ऐड कले एठी आसला तो c equal to 2 plus 2d and since d lies between 1 to 2 this is 2 plus 2 into d is between 1 to 2 na so this will be 2 plus 2 into 2 will be 2 and 2 into 2 will be 4 so this will be equal to 2 add कर देले 4 to 6 so c lies between 4 to 6 2 plus 2 माने एटा 2 plus 2 4 हेगला 2 plus 4 का होने गेला 6 हेगला तो जदि b टा 1 d जदि if d lies between 1 to 2 जदि d 1 to 2 भीतर रहइबो तो c टा कोन रहइबो 4 to 6 भीतर बुझियला कोन कले डिटरमिनेंट एटा को सॉल्व कर देले आ टिके हां 1 1 थिला तो दीटा 0 करके सॉल्व कले त हमको फैक्टराइज हेगी सुना पिला वाले गोटे इक्वेशन मिलला 2 minus b minus c minus 2 now 2 minus b माने d एटा b eta 2d तो 2d cube is determinant of a and determinant of a 2 to 16 भीतर रहउची तो इथरे हम d बाहर कर देले हमको c रो बचा देला c रे इक्वल टू 2 plus 2d आसला 2 plus 2d और d 1 to 2 भीतर रहला तो 2d को थर रहला 2 to 4 भीतर रहला पुणी plus 2 कर देले तो 4 to 6 भीतर रहला बुझे भलो क्वेश्चन नथिला a raised to 30t equal to this then a value of alpha equal to so look a कोन दिया है छी a equal to cos alpha minus sin alpha and cos alpha एटा जदि a स्क्वायर बाहर करियो याको पुणी cos alpha एबे हम मल्टीप्लाई करते एक क्वेश्चन ना 2-3 टाइप रे आछ नै कि
सेम ईयर आछे किंतु दु तीन टाइप रे आछे तो एटा पाई बाय 64 आस्तला ना क्वेश्चन ना पाई बाय 64 आस्तला सेम क्वेश्चन दु थर रिपीट हो जाय now 131 the total number of matrices A equal to A is given A कौन देते देखो 0 2y 1 2x y minus 1 2x minus y 1 this is A and given A into A transpose equal to what is given and A transpose into A equal to 3 into I 3 into I 3 so let us find A transpose into A so A transpose माने कौन होगा 0 2y 1 2x y minus 1 2x minus y 1 this is A transpose into A 0 2y 1 2x y minus 1 2x minus y 1 A into A transpose and this is equal to 3 into I3 I3 कौन होती है identity matrix of order 0 order 3 cross 3 ना तो identity matrix of order 3 cross 3 अभी multiply करते हैं first row first column 0 into 0 will be 0 2x into 2x will be 4x square and this is again 4x square 0 into 2y 2x into y so 2xy minus 2xy 0 minus 2x plus 2x this is also 0 2y into 0 will be 0 2xy 2xy ये भी 0 आते 2y into 2y तो 4y square plus y square plus y square and this is 0 and this is 0 0 z आसियो कौन आसिला 1 1 plus 1 plus 1 this will be 3 एति आसिला and this is equal to हम कौन लिखते 3 रो भितर मल्टीप्लाई करते 3 0 0 0 3 0 and 0 0 बुझियो दुईटा मैट्रिक्स इक्वल तो करस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दो दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर ना 4x स्क्वायर इक्वल टू 3 so 4x square equal to 3 so x square will be equal to 3 by 4 and x is equal to plus or minus root 3 divided by 2 next 4y square this is 4y square plus y square which is 6y square equal to 3 and 6y square is equal to 3 so y square equal to 3 by 6 which is 1 by 2 and y is equal to plus or minus 1 by root 2 so कौन भाभी आंसर कौन आने वाला था क्वेश्चन x comma y the total number of matrices A equal to this x is not equal to y x यदि not equal to y हला तो देखो x को हमें कौन ने ले root 3 by 2 ने ले और y को हमें ले 1 by root 2 हां दुईटा जगह पॉजिटिव ने हां दुईटा जगह पॉजिटिव तो गोटे मैट्रिक्स हेगला एटा को पॉजिटिव ने ले एटा को नेगेटिव ने ले सेकंड मैट्रिक्स हेगला दुईटा जगह नेगेटिव ने ले root 3 by 2 and minus 1 by root 2 ये थर्ड मैट्रिक्स हेगला तापर फर्स्ट को नेगेटिव नहीं की सेकंड को पॉजिटिव नहीं ले ये हेगला फोर्थ मैट्रिक्स सो लाइक दैट हाउ मेनी सच मैट्रिसेस कैन बी पॉसिबल 4 सो द आंसर विल बी 4 चारिटा मैट्रिसेस हे परिबो एमती हां सही परिबो चारिटा द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कैन बी 4 ठीक है A is a symmetric matrix and B is a skew symmetric matrix देखो 132 A कौन देछि A plus B equal to this then A into B is let A plus B equal to 2 3 5 minus 1 let this will be equal to P A is symmetric and B is skew symmetric matrix A जदि symmetric होछि then A को हम कौन लिखिबा P plus P transpose divided by 2 this is A and since B is skew symmetric this can be written as P minus P transpose divided by 2 so what will be A equal to P P माने 2 3 5 minus 1 this is P plus P transpose ना रोटा कॉलम करबो 2 3 5 minus 1 है ना into 1 by 2 into 1 by 2 so 2 plus 2 will be 4 3 plus 5 will be 8 4 5 plus 3 will be 8 and this is minus 2 multiplied by 1 by 2 so this is equal to 2 4 4 and minus 1
एटा हेगला a and b is equal to p minus 2 3 5 minus 1 this is b minus b transpose मतलब b transpose is 2 5 3 minus 1 multiply by 2 so 2 minus 2 will be 0 3 minus 5 will be minus 2 5 minus 3 will be 2 minus 1 plus 1 will be 0 multiplied by 1 by 2 so this is equal to 0 minus 1 1 and 0 so we got a and b both मिलगला a and b हमको now a into b बचा और बचा देखो a into b equal to multiply कर दो therefore a into b is equal to कौन थिला a देखो a हमको कौन मिलला a 2 4 4 minus 1 2 4 4 minus 1 this is what a is now b कौन 0 minus 1 1 0 0 minus 1 1 and 0 now multiply 2 into 0 will be 0 and 4 into 1 will be 4 2 into minus 1 will be minus 1 2 plus 0 4 into 0 will be 0 minus 1 into 1 will be minus 1 4 into minus 1 minus 4 plus 0 0 plus 4 will be equal to 4 minus 2 minus 1 and minus 4 so this is a so 4 minus 2 minus 1 and minus 4 B option आसेगा कौन देख देखो A सिमेट्रिक B स्क्यू सिमेट्रिक सो A plus B देछि ना तो A plus B कौन हेगला P हेगला तो P plus P ट्रांसपोज हेगला A and B कौन हेगला B हेगला P minus P ट्रांसपोज by 2 A भी मिलेगा दुटा जाको मल्टीप्लाई कर दो ठीक है नेक्स्ट देखो B is given is the inverse of a 3 cross 3 matrix A तो B A रो inverse B होची A रो inverse then the sum of all values of alpha for which determinant of A plus 1 is equal to 0 is determinant of A देखो given कौन given अच्छी B is the inverse A inverse है गला B तो determinant of B कौन है गला so देखो B given अच्छी ना तो determinant of B is equal to determinant of B equal to 5 into minus 2 minus 3 this is minus 2 minus 3 minus 2 alpha into 0 into minus 1 will be 0 minus alpha and plus 1 into this will be 0 minus 2 alpha so this is minus 5 into 5 will be minus 25 minus 2 alpha plus alpha will be 2 alpha square and minus 2 alpha so this is equal to 2 alpha square minus 2 alpha minus 25 and since determinant of A plus 1 equal to 0 determinant of A करते हैं 2 alpha square minus 2 alpha square minus 2 alpha minus 24 this plus 1 equal to 0 so this is equal to 2 alpha square minus 2 alpha minus 24 is equal to 0 2 रे डिवाइड कर दियो alpha square minus alpha minus 12 equal to 0 एटा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना जदि दुईटा रूट को नेगले alpha 1 plus alpha 2 the sum of the roots will be equal to b by a अब b रो वैल्यू होची एठी -1 minus b by a रो वैल्यू 1 तो 1 by 1 will be equal to 1 हेगला sum of two values will be equal to 1 बुझियला तो एतिकी क्वेश्चन हमर आस्तिला 2019 रे डिफरेंट शिफ्ट जोडा हम सब सॉल्व कर देल ठीक अछि अब नेक्स्ट लेक्चर हम कोन करबा नेक्स्ट लेक्चर हम 2020 रो वीडियोडा बनेबा पुत्र 2020 रो वीडियो सॉल्यूशन पकड़ चैनल नुवा छे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को प्रेस कर दे हम आगु जाबु एबते सब वीडियो आनिबा नेक्स्ट चैप्टर विल बी डिटरमिनेंट्स यार आउ दुटा तीनटा हो कोड जेई लेक्चर ओडा 2020 or 2021 then we'll go for determinants and then continuity differentiability को ठीक है मिस नेक्स्ट लेक्चर until then bye bye